Good morning, everyone. On behalf of MIT I, Priya Chanda, Academic Coordinator, extend a warm welcome to you all for joining us today. We are glad to have you all here as we announce our second session under the exciting initiative Synergy Sphere Uniting Minds for Collective Success. With this initiative, MIT aims to provide a platform for our students to share their knowledge, wisdom, experiences with their fellow peers. Our primary objective within this initiative is to foster a learning community where students can not only exchange insights within their respective domains, but also can share their personal journeys and experiences. Our goal is to inspire students to connect with each other, allowing them to learn and grow together. So, my dear students, are you all ready to support one another? You can type yes in the chat box to show your energy to us here. Are you all ready to start with the session? Type yes in the chat box. We will be glad to see you all there. Okay, great. Thank you, students. Great to see that you all are here to support each other. So now, without the further ado, let's introduce our speaker for today's session, who is none other than one of our student. Please welcome Mr. Sanjay R. Dubey, one of our esteemed MITSD student, who is from the March 2022 batch. He is pursuing PGDM program with a specialization in operations management. He has over 21 plus years of enriching experience in technical services and product development. Currently, he is an assistant general manager with Morganite Crucible India Limited. His professional journey began as a graduate engineer training graduate engineer trainee in the quality control department in Messana in June 1999. His career continued to evolve through various positions. As of 2022, he assumed the role of Assistant General Manager in Technical Services and Product Development at MCIL Aurangabad, showing his increasing responsibilities and leadership in technical aspects. As of April 2022, he began serving as AGM in QA, new product development, and customer complaint management, demonstrating his continued commitment to maintaining and improving product quality and customer satisfaction. His dedication and hard work over the years have been a great force behind the growth and development of Morganite Crucible Private India Limited. This session would be conducted in an interview style. To conduct the interview, we have with us our Professor Bhagyashree Pandey. Now I will request ma'am to start the session. Thank you. So, yes, thank you so much, Priya. This was really a wonderful start of this session, I would say, and great morning to you all students. So, dear learners, we are really excited to start with this, our second session of Synergy Sphere. I, Professor Bhagyashree Pandey, Academic in Charge. I welcome you all and I welcome Mr. Sanjay sir on this session of Synergy Sphere. I would like to start this interview with a famous, I would say, motivational line or a famous quote of Mr. Sanjay sir, which is "Zindagi har kadam ek nayi jang hai," right, sir? Yes, yes. So, yes, dear learners, with every person in his or her life has to go through tough patches, which gives us a lot of learnings, right? Yes. This quote is nothing but a motivation for the day. And today's speaker among the student, who is our second speaker of this initiative, is Mr. Sanjay sir. So I believe experience is a great teacher, but learning from the experiences of others is the art of accelerated wisdom. So during this session, we are going to learn about Mr. Sanjay sir's his background, how he has gone through tough patches, how he has learned from many things, his career journey from graduate engineer trainee to AGM now in operations field, and certain techniques, tips, tricks which will obviously help you being the professional in your field. And even if it is not related to maybe your domain, maybe you are not a part of operations, but still the experiences which Sanjay sir have gone through will definitely give us a lot of learning in this session. So, Mr. Sanjay sir, I once again welcome you to this virtual platform of MITSD Synergy Sphere. With your permission, I would like to start with an interview, as all of us are keen to know about you and about your experiences in marketing domain. So, shall we Okay. start, sir? Yes, yes, ma'am. Sure.
Great, so great. So yes, still Priya Chanda has given you a bit of an introduction. I would like to ask you to know more about yourself, like where you have started your journey, where you born, and where you took your education, and maybe bit of your family background and your Okay. educational background. Okay. So first of all, thanks MIT team for giving me an opportunity in as a speaker in forum called Synergy Sphere, and special thanks to Bhagyashree ma'am and Priya for her coordinations. And it is a great opportunity to talk after my after I completed my education in 1999. So ये मेरा पहला interaction है in student platform, and I am also a student of MIT. So good morning all. So we all are leaders. We are all leaders or not? We all are leaders, na? In our journey, someone can means lead a cricket team as a captain, or someone lead some small projects. Means कुछ ना कुछ लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ लीड किया होगा. So we all are leaders. And remember a great quote from Henry Ford, who is the first car maker. If you think you can do a thing or think you can't do a thing, you are right. Okay. So एक ये अच्छी कहावत है मतलब. और if you remember जो पहली कार बनी थी, what Miss Henry Ford ने क्या मिस किया था? Actually he missed to put the reverse gear in his car. Okay. और and he realized when he drive his car और वहां पे कहीं स्टक हुआ, so वो रिवर्स के लिए ही थिंक कि अभी मेरे को पीछे कैसे लेना है. ठीक है. So innovation starts like that. और आज when you compare that day with today, you feel means how we grow or how we innovate in the field of car manufacturing. So that is the way we start thinking of innovation. और आज के सेशन में I will use 30% English, 40% Hindi, and 30% know any language, because 30% you understand everything what we are talking. So ये लाइफ में भी ऐसे ही होता है, ऐसी जर्नी चलती है. तो बहुत सारी चीजें हमको समझने और बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है. Actually, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग विथ यू. और बोलते हैं ना हम लोग, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो इंतजार करो, और इंतजार वाले पल को भी एंजॉय करो. सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. मीन्स ये लाइन समझ में आया होगा आप लोगों को. definitely. So, अगर समझ नहीं आया तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ. सो जब सड़क पे बारात नाच रही होती है तो हॉर्न मार मार के परेशान नहीं होना है. गाड़ी से उतरकर थोड़ा सा नाच लेना है और मन शांत हो जाएगा. मन शांत हो जाएगा और टाइम तो उतना ही लगना है. ठीक है. सो दिस इज अ पार्ट ऑफ जर्नी, एंजॉइंग एवरीथिंग, एवरी मिनट्स ऑफ लाइफ. सो कोई वरी नहीं होना चाहिए लाइफ में. सो दिस इज व्हाट आई थॉट मीन्स. And for my introduction, what Bhagyashree madam asked for that. So my name is Sanjay Dubey. So I am heading operation in Morganite Crucible India Limited. Actually, the product that we are manufacturing is we called as a crucibles. Lots of people don't know, because कुछ लोगों ने शायद लैब में यूज किया होगा crucibles during the some chemical testings. But we are manufacturing the crucible for industrial use. And that crucible is used for as a pot for melting of metals, ferrous and non-ferrous metals. Okay. Basically aluminium है आपके जितने भी means car manufacturer है, automobiles manufacturer, they are using crucibles. And जितने भी jewelry makers हैं, I am just giving example that you able to understand what is the crucibles. Okay, so they are used the crucible used for melting of molten metal, aluminum and all. So for example the spare parts like gearbox and all. So ये सारी चीजें पहले मेटल को मेल्ट करते हैं, उसके बाद they are doing the castings for every metals, even gold, silver and anything. So we are manufacturing that melting pot. Okay. I joined this company in 1999 as a graduate engineer trainee. So from that role, I am currently now leading as the assistant general manager. So my department is right now is technical services. So I want to just explain what is the technical services. So I provide a technical support to the sales, marketing and customers in the field. And all the technical supports required for the operation like production, process or improvements inside the plant, means anything that went wrong or any improvements they went, like energy saving projects, means if right now lots of focus on energy saving, carbon emissions,
So I am providing that support because I know all the technical things. And for example, if we fired a crucible, so that Mhm. required around 1300-degree temperature for firing, and that used lots of energy for firing reaching the temperature. So we will work with the team how to reduce the gas consumption of firing cycle of the crucibles. So Okay. like that, so that is the internal technical support to the plant people. And I work with globally with the MMS plants. Actually, Morgan Advanced Material is a business rich in history and innovation. So Mhm. this plant is founded in 1856 in UK. So this is Oh, UK based MNC. Okay, okay. and yes, Mhm. and our business is we have a group products with two global divisions and five global business units. So we Mhm. have two global divisions, that is thermal product division, and in thermal product division we have two business units. One is Mhm. thermal ceramic and one is molten metal system. So Mhm. in molten metal system division business unit, so Morganite Crucible India Limited, we are one. Second plant we have in Germany, third plant we have in Brazil, and fourth plant we have in China, Suzhou. So Mhm. these four plants came under the thermal product division, and we all are manufacturing crucibles and accessories for foundry applications. तो ये चारों प्लांट जो है वो एमएमएस के अंडर में आते हैं. एंड द सेकंड डिवीजन इज कार्बन एंड टेक्निकल सिरामिक. So Mhm. that has electrical carbon, seals and bearing, and technical ceramics. So these are the two divisions of Morgan. And other than that, my educational background. So I done my schooling in Kendriya Vidyalaya in Mehsana, that is near Ahmedabad, Okay. and pass out from CBSE. And the madam that introduced Jindagi Har Kadam Ek Nayi Jang Hai. So actually, when I am a student of 8th or 9th, so my principal, Mr. M.S. Rathod, so in every speech, at the end of his speech, he sing this song. So उस टाइम पे तो समझ नहीं आया कि why he is singing. Okay, but when I joined the organization and I moved forward, so I remember this song, Jindagi Har Kadam Ek Nayi Jang Hai. And you all win with if everyone work together as a team. If सारे लोग संग में है, means we work as a team, then only we success in our growth or our career. So this is one thing I Definitely, learned sir. in the schooling time. Yes, ma'am. You want to talk something? Bhagishri ma'am? नहीं नहीं नहीं, I'm just आप कुछ बोल. supporting. I'm just trying to understand more. Okay, okay. Then I done my Bachelor of Science in Chemistry. So this is my graduation. Mhm. So I done my graduation from Vallabh Vidyanagar, Sardar Patel University, that is located in Anand, Gujarat. Okay, Mhm. and I done my Masters in Material Science and Technology. So here the important thing at that time in 1999, when we choose the subject or we decide our career. So there is that time there is no any career counselor. What we Mhm. are now in today's, we have lots of career counselor in Google. We search how to. In that time, we don't have that things in our 1999. So Mhm. when I am pursuing my graduation, Mhm. so in final year, so Mhm. I just search that in the market. So Mhm. at that time there are lots of craze of organic chemistry, masters in Mhm. organic chemistry. Mhm. So उस टाइम पे वहां पे मीन्स वेटिंग लिस्ट होता था फॉर Mhm. एडमिशन इन मास्टर्स. Mhm. So मैंने सोचा कि मतलब why people are rushing there? Is there is no any other scope in involved that we will do other than the organic chemistry? Mhm. ठीक है. So उस टाइम पे I connected with one or two professors and I just read something about material science and technology. So मैं एक दिन वो डिपार्टमेंट में गया that is near to my college and I Mhm. just go in that department as Mhm. an unknown and I see the research and development and innovation work that they are doing. Okay, so I decided not to do organic chemistry and I joined masters in means material science and technology. And at that time in India, only that department provides a master degree in material science and technology. Okay, Mhm. so that is the critical point or critical time to take your decision how to grow or how to move forward in your career. Okay, Mhm. because organic chemistry जो था 3-4 years max, but the materials and technology is recognized globally worldwide. उस टाइम पे इंडिया में इतना वो नहीं था, बट ग्लोबली मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट था, जो मतलब इनोवेशन एंड R&D एंड रिसर्च के लिए था. Mhm. So that is very means make my future means very great future for that. और Mhm. आज भी
means this subject is very vast actually. Yeah, actually. Yes, yes, material science and technology. So when I मतलब मैं MSc में जब मैंने masters join किया, so when I start means doing the research and pursuing my first year, so I saw lots of DRDO sponsored projects we are doing. So at that time, actually, we are working on the Agni missile nose, the nose of the Agni missile. Okay. So that missile, there is issue because at high temperature the nose melt down during the application. So we are working on that. So I am the part of that project. So that motivates me a lot because I meet APJ Abdul Kalam sir 2 times in my department. Wonderful. Okay. So he visited 2 times to check the project progress on this Agni missile nose. And I see the dedication of APJ Abdul Kalam. So we start the furnace around 12 o'clock in the afternoon, and he sit with us from 12 o'clock from the afternoon since next day afternoon till we finish the firing and melting point of that nose material. So I complete 24 hours you are working yes, with ma'am. him. So that is the motivation of our team. Means a person who is at that position spent 24 hours sitting and discussing with us and monitoring the firing cycle of the Agni nose missile material. Wow, So, that's a yeah. wonderful experience, sir. Yes, ma'am. So these all are motivations we are moving for our career now. So this is one of the example. So I done my masters in material science and technology. So I just quote one thing: today is reader and tomorrow is leader. So these are the base what we are making in our future. Okay, from inspiration of people like APJ Abdul Kalam and my head of departments LM Manocha sir. So who brings the carbon fiber in India? He is the first person who developed the carbon composite in India. So everybody knows that his research work. So this is my thing. Yes, ma'am. So this is my educational background. Other than that, I am very good in my sports. Okay, so I represent my basketball team, university basketball team, consecutive 5 years. Okay, and I am a national player of Gujarat basketball team. I represent Gujarat 2 times in a national basketball team tournament. Okay. So these are my activities, other than my education. Great. Okay, so one project work I have done in my education, that is fiber properties of basalt rock. So the rock that is coming from the mountain. So so that is my project work in my masters. So that is also a learning for me, because how to draw fiber. Fiber means the fiber, the hair is called fibers. So बाल के जैसा जो fiber है ना उस rock में से draw करना था. So there is no much literature at that time. So I just thinking कि how to draw fiber from a rock. So उसको melt करना पड़ेगा, उसमें से fiber बनाना पड़ेगा. So I bring that rock to a gas welding shop and I told him यार उसको weld करना थोड़ा गरम करो ना. So he's my friend. So he just make the rock hot and I just put a nail on that and I just pick the fiber from that rock. So this is a new thing what I learned. बहुत ज्यादा R&D करना पड़ेगा आपको. बहुत ज्यादा R&D कर. Yes. So this is all from my educational background as well as my sports means the other things, what activities what I have done, and I am general secretary of my college during my graduation. Wow. So these all are learning from my career, which during my education and all. तो सब जगह पे आप लीडर पोजीशन में रहे हो हमेशा से. अभी मौका मिलता है ना तो छोड़ना नहीं. Leadership quality is already there. Already there. Yes. Great. So it was really nice to understand your experience, your educational background, definitely, sir, and the experience which you had shared by meeting APJ Abdul Kalam and working with him for such a longer period of time. It's I feel बहुत बड़ी opportunity थी वो, और सबको नहीं मिलती है और सबको मिलती भी है तो उसमें से क्या हमें लेना है. That point I was mentioning, you have to learn from the experiences of others. So this is the start of this particular session. I would say this has light up the fire in amongst everybody कि हमें क्या क्या यहाँ से सीखना मिल रहा है अभी सेशन में से. तो सर ड्यूरिंग द पॉइंट यू आर मेंशनिंग कि आप अभी मॉर्गन में काम कर रहे हो, आप कौन कौन से प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हो, तो द पीपल वेर मेंशनिंग हियर इन द चैट बॉक्स कि क्या क्या प्रोडक्ट्स में मतलब एग्जैक्टली क्या है. दे वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, दे वर मेंशनिंग सर्टेन पॉइंट्स. हाँ,
तो एग्जैक्टली क्या है, तो आई बिलीव आप एक शॉर्ट अगर पिक यहाँ पे अगर प्रेजेंट कर सकते हो कि एग्जैक्टली व्हाट इट इज, तो Yes, सबको शायद आइडिया थोड़ा सा आ जाएगा उसमें. And Rohan is again also from, I guess, industrial polymer chemistry, and he is now working with GAIL project at CSIR in CL. So, if possible, Rohan, you can connect with Sanjay sir. And yes, this is, I believe, this is the objective of this particular platform, to connect all you students with each other who are from coming from same background, or who are working in some kind of similar project. So, it will be helpful for you. So yes, sir has presented here. He will just go through the pics here. So ये crucible है जो सर अभी explain कर रहे थे. Yeah. So this is the one innovation what we have done. Actually, I want to just tell you. So this is the largest crucible what we manufacture in India. So India में सबसे बड़ा crucible ये हमने last I think we success in this project in I think in July. So we make this crucible. So इस crucible का जो diameter है वो 1.5 मीटर का है and height is 1 meter, more than that. And in this crucible, the capacity of this crucible will melt aluminum of around 3 to 3.5 metric ton capacity. So एक बार में आप 3.5 metric ton aluminium इसमें melt कर सकते हो. And this crucible works at very high temperature. Maximum temperature we go up to 1600 degrees Celsius. So this is the product what we are manufacturing. Okay. So when you want to make stainless steel or cast iron, the temperature is around 1500. So you can use this crucible to melt that metal. Okay. So this is the product what we are making. And I just show you this another picture. So you see crucible के ही another types है ये. Yeah, this is the another type of crucible. So product smaller, line. bigger, yeah, product line. So this is specifically used for product any metal melting. Metal melting, metal. Yes. Even you visit when gold shops or gold jewelry ना, so in the back side they have a small crucibles. तो उसमें जो आप पुराना सोना या सोने के बिस्किट से जो वो कट करके स्मॉल मेल्ट करते हैं, उसके बाद ही वो उसको कास्टिंग करते हैं. कास्टिंग मतलब उसका शेप देते हैं. तो कोई भी शेप देने से पहले उसको मेल्ट करना पड़ता है, मतलब लिक्विड फॉर्म में लाना पड़ता है. So for that melting, people are using crucibles. Yes. So I think अभी clear हुआ सबको, means anybody want anything, any questions on that? So this is the product. Actually, this is a unique product globally. In India, almost 4 to 5 plants who are making this product, and we are number 1 in that crucible manufacturing. And other than this, we are manufacturing some accessories of foundry products. जैसे आप देख रहे हो फॉल्चूट लाइनर है, दिस इज द लाइनर एंड यू सी द कन्वर्टर सेगमेंट. सो जितने भी डक्टाइल आयरन पाइप मैन्युफैक्चरर हैं, डक्टाइल आयरन पाइप जो पानी की पाइप बनती है बड़ी बड़ी, सो दे आर यूजिंग दिस प्रोडक्ट्स फ्रॉम मॉर्गन. सो एग्जांपल टाटा मेटालिका एंड जिंदल सॉ, सो दे आर मेकिंग द स्पन पाइप बाय सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग प्रोसेस. In that process they use the converter segment and this liners. So this is the unique product what we are manufacturing as a Morgan. Oh, okay. और इसमें जैसे ब्लू लाइटिंग दिख रहा है आपको in picture, the blue lighting. So this is a temperature measurement device in molten aluminium. अच्छा. So when you dip this in molten aluminium, there is thermocouple assembly. So there is a display of the temperature, at what temperature, what is the temperature of the molten metal. So this is that product. And in right side degassing rotor. So degassing rotor जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, दही में से मक्खन निकालते हैं ना, हम वो यूज करते हैं, क्या करते हैं उसको, आई डोंट नो इन मराठी एक्चुअली. सो वो फेंकते हैं ना दही को, उसमें से मक्खन निकलता है. तो दिस घुसळणे म्हणतात त्याला, घुसळणे. जो भी है इन मराठी. So this is that product, and that product is used to remove the hydrogen gas from molten aluminium, because hydrogen gas will have some defects in the castings. So वो इसमें यूज करते हैं to remove the hydrogen gas. So these all are the unique products what we are manufacturing. So अभी क्लियर हुआ आपको what? Yes, I guess क्लियर हो भी गया, और उस पे रिलेटेड कुछ कमेंट्स भी यहाँ पे आ रहे हैं. There are many people who are related with Parag is saying that Morgan was his supplier for heat shield insulation. Even Ajay is also saying, can you sir
share the composition of this product, but I guess we'll take that later because Rohan wants to ask something. So I request Priya, can we please unmute Rohan? He wants to ask something. Yes, can we have Rohan here? Priya? He can unmute now. Hello, ma'am. Yes, Rohan. Good morning. Hello. Good morning. Hello, sir. I have one question. I did my master's in industrial polymer chemistry, and now I'm working as a R&D at CSR NCL. So my question is that how this R&D experience will help me to grow my career in business analytics. Okay, so nowadays, I am giving the example of Morgan. So in Morgan, from after COVID, so we see that lots of new requirement arises in the market. Okay, for example, lithium-ion battery requirement globally now, EV vehicles are moving forward. So the business is growing, and for that, the future growth is now depends only in R&D, the new product requirement from the market. And for example, if I am giving the example of Morgan, so every year our total sale revenue, out of that 25 to 30% revenues came from new product development. And all the new product what we are working is based on the R&D and all. Okay, other than R&D, we are not able to produce new products, new recipes, new mixes. So now we are hiring 3-4 people for R&D center in Morganite Crucible in Aurangabad. So like process engineers we are hiring, material science engineers we are hiring. So all this we are hiring for future R&D and future growth of the plant of the Morgan. So now we are focusing on that. So your future in R&D is very bright. What I feel, seeing the current market scenario and the status, and Make in India projects what the central government is working. So everything we are now Make in India, and based on that, lots of R&D and new product requirement is done. And just I am sharing the total budget of Morgan. We are spending 30% of total budget in only R&D for in Morgan, overall Morgan globally. So very bright future for R&D in means what I experience and what I know from my knowledge. So Rohan, I believe you have cleared with the doubt. Okay. So let us move ahead with the session now, sir. I request you to share a bit about maybe your first job experience, your first interview, because there are students in this platform who might be just entering into the field, or maybe who have done 3 to 4 years of experience there. They want to face with maybe shift in the career, or maybe such as cases are there. So आपका ये experience भी बहुत helpful रहेगा लोगों को. So please share about that as well. So मैं just share मतलब share in the sense I am when I am in final year of my masters. So there is a campus interview for the recruitment. Lots of companies are coming because they want some new product R&Ds and all. So our department is connected with lots of companies like Enercon India, who is making windmills and all, and the crucible manufacturer and all. So मेरा पहला जो इंटरव्यू था वो आखिरी इंटरव्यू, आज तक मैंने इंटरव्यू दिया ही नहीं है. मुझे जरूरत नहीं पड़ी. अच्छा. More dedicated person towards the company. I don't know, but madam, just so I am just sharing my first interview when I go in the means हम इंटरव्यू से पहले बहुत सारी प्रिपरेशन करते हैं, क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे, मतलब we are little bit worried question related to material science or material and anything. So मैं इंटरव्यू में गया तो my HOD head of department and one MD is sitting inside that room, and just my turn मेरा टर्न आया तो मैं अंदर गया. So I just sit him and he gave me a blank paper. So he asked me, you sign in this blank paper. So मैंने sign किया. So he just told me when you are joining our company. मैंने कहा सर इंटरव्यू खत्म हो गया क्या? So actually that MD is a signature reader expert. Okay. So he selected me based on my signature, what I have done in that day, means during that interview. So वो मेरा पहला इंटरव्यू और आखिरी इंटरव्यू था, आज तक मैंने इंटरव्यू दिया नहीं. I must say you are really lucky person. I don't know ma'am, but just I am sharing my experience. So ये मेरा मतलब so he told me when you are comfortable you join that. So I think I joined after 1 or 2 months after my masters.
So I joined that company and I go in that company and I join as a QC trainer. Okay, so in quality control, he took me so that he make me a little bit basic learnings because he want to develop some new products and all. So he मतलब उन्होंने मुझे लैब में डाला कि you see the raw materials and all. But my mentor assigned me a job for particle size analysis. मीन्स जैसे हम वो गेहूं वो चलनी में चालते हैं ना, जैसे वो सीविंग करते हैं, वी कॉल्ड एज सीव एनालिसिस. मेनी टेक्निकल पीपल नो दैट. वो अलग अलग दाने अलग अलग करने होते हैं, मतलब बड़े दाने छोटे दाने. सो दैट इज कॉल्ड सीव एनालिसिस. मीन्स दैट so my mentor assigned that job to me and he told me you have to do whole the day this thing and he told me you do the sieve analysis of graphite, the carbon. So उस टाइम पे इतना फैसिलिटी नहीं था. So we are doing manually. बहुत सारी सीव लगा के मैनुअल करते थे. वो ग्रेफाइट जो उड़ता था तो पूरा बॉडी ब्लैक हो जाता था, मीन्स कपड़े और वो. सो मैं जब शाम को घर जाता था, सो माय मदर सी मी कि तू कौन सी जॉब कर रहा है. जस्ट ही आस्क्ड मी कि व्हाट यू आर डूइंग आफ्टर डूइंग योर एमएससी. सो मैंने उनको बताया तो उन्होंने ही टॉक विद मी माय फादर कि वो आता है उसके कपड़े काले, मुंह काला वो. तो मैं मतलब आई जस्ट वरी कि माय फादर इज एक्चुअली इज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इन ओएनजीसी, द सेंट्रल गवर्नमेंट नवरत्न कंपनी ना. ही इज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर. ओके. So when I reach home na, तो one day my father asked me कि what you are doing. So I just explain him. So उन्होंने मुझे बोला आप जॉब छोड़ दो, जॉब करने की जरूरत नहीं है आप. So I just means फर्स्ट थिंग मैंने पहली बार मतलब फादर को मना किया कि नहीं मैं जॉब नहीं छोड़ूंगा. सो दैट इज माय फर्स्ट डिसीजन अगेंस्ट माय फादर. ओके. बट इफ आई थिंक मतलब आज मैं सोचता हूँ अगर मैं उस समय वो काम करना रुक जाता या मैं जॉब छोड़ देता, so I will not reach till this AGM position because hard work always pays. Okay, definitely. This is my first working experience. So I request means I just tell one word: accept the challenge. Accept the challenge. Okay. Right, so right. don't be afraid to challenge the pros even in their own backyard. Okay? So this is the learning from my first job. So I just share to you. खुद को थोड़ा सा पुश करना आपको सीखना पड़ेगा. yes, ऑब्वियसली एवरीबडी व्हेनेवर देयर इज अ चैलेंज थोड़ा सा डर लगता है कि क्या होगा आगे जाके मेरा बेसिकली. तो लेकिन आपको थोड़ा सा खुद को पुश करना. यू डोंट नीड टू थिंक मच अबाउट कि क्या हो जाएगा. यू जस्ट नीड टू ट्राई एंड गो अहेड. राइट. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, आपको आपकी लाइफ में कभी तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आया होगा कि जिसके वजह से द थिंग्स माइट हैव चेंज इन कंप्लीट डिफरेंट वे फॉर यू. हाँ, ये बहुत सारी चेंजेस और चीजें आई मैम. मतलब लॉट्स ऑफ थिंग आई फेस इन माय लाइफ. बट जो सबसे बड़ा चैलेंज और जो सबसे बड़ा मतलब जिसने पूरी लाइफ चेंज कर दी इन ईयर 2002, दैट इज 29th of May. आप कभी भूलते नहीं हो वो दिन. सो दो तीन चीजें हुई जिससे मतलब सो दैट इज माय फादर वाज एक्सपायर्ड इन अ रोड एक्सीडेंट. सो सडनली एवरीथिंग चेंजेस. मतलब मैं घर में सबसे बड़ा था, दो ब्रदर थे, एक सिस्टर थी, ऑल आर अनमैरिड other than me. So and he's central government employee and we are living in a government quarters. We don't have our own house. And at that time I just planned to join my PhD in material science. So मैंने सोचा I will join PhD, but that day everything changed suddenly in your life. So lots of challenges. तो आपका PhD कंप्लीट हुआ? मैम मैंने PhD नहीं किया because of other responsibilities what I have on my shoulder to settle my two brothers, my sister marriage, everything. So ये एक बड़ा change और challenge कह सकते हो आप जो मेरे life में आया. So उस time पे we are living in Mehsana actually. So at that time I just think कि how to move. Mehsana is a small town. तो मैंने मतलब एक सोचा कि लेट्स शिफ्ट टू अहमदाबाद. इज अ बिग सिटी एंड देयर इज लॉट्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड अदर थिंग्स टू सेटल माय ब्रदर्स एंड ऑल. तो मैं अहमदाबाद शिफ्ट हो गया. बट माय जॉब इज इन Mehsana, so the distance is 70 kilometers from Ahmedabad to Mehsana. So I wake up every morning 4 o'clock. I reach plant 7:30 and I spend around 5:30. उसके बाद मैं ट्रेन पकड़े, मतलब मैं जाता था 8 बजे तक मैं घर पहुंचता था. And I just take my dinner and sleep because 4 a.m. is fixed. Either you sleep at 11 or 12. You have to wake up at 4. I walk 3.5 kilometers from my home to railway station.
बिकॉज उस टाइम पे वो रेलवे के पासेस बनते थे, दैट इज अराउंड 100 रुपीज पर मंथ. Okay, so I do this for 4 years, 2002 to 2006. और इन 4 सालों में मैंने मतलब मेरे ब्रदर का मैरिज किया एंड आई सेटल्ड देम. सो वन ऑफ माय यंगर ब्रदर इज सेफ्टी हेड इन अहमदाबाद एयरपोर्ट in central government. So all are settled. After that, I moved from Ahmedabad to Mehsana with my family, my wife and my daughter. So this is the struggle time, and means I just overcome this challenge smoothly, and now everything is settled. और मैंने 4 साल मतलब जो टाइम दिया मतलब, and one thing I want to add here, in my 21 plus year career, I never came office late. आज तक मैं कभी ऑफिस में लेट नहीं पहुंचा. So this is very important to everyone. I just give one example कि आप कभी भी ऑफिस या कोई भी काम करने जाते हो ना, reach 15 to 20 minutes early. What benefit I am getting? I just I want to share with all. First thing, when you leave your home early, little bit early, you reach ऑफिस सेफली. आपको मतलब हड़बड़ी नहीं होती है. अभी जैसे मोस्ट ऑफ द कंपनीज टाइमिंग इज 8:30. आई थिंक द कंपनी स्टार्टेड. व्हेन यू सी द रश बिटवीन 8 to 8:30 इज वेरी ह्यूज. Okay, so there is a safety concern. The first thing that I understand. The second thing, when you rush to your office and reach at 8:30, तो जब आप 8:30 पहुंचोगे, यू डिडंट सेट योर होल डे टाइम. मींस आप अपना माइंड सेट नहीं कर पाओगे. यू आर ऑलवेज कंफ्यूज कि हम पहले क्या करें, बाद में क्या करें. आप समझ रहे हैं? सो मैं हमेशा ऑफिस, मेरा मैक्सिमम आई रीच ऑफिस है 7:45. माय टाइमिंग इज 8:30. आई सिट 10 to 15 minutes my office, and then I finish my whole day planning in 30 minutes. Okay. तो सबसे बड़ा बेनिफिट मैंने ये देखा है, और मैं अपनी टीम को भी यही टीच करता हूँ कि आप ऐसा मत सोचो कि मेरा टाइम 8:30 का है तो मैं 8 बजे क्यों आऊं. बिकॉज अगर आप थोड़ा टाइम जल्दी आते हो ना, आपका पूरा दिन आराम से जाता है. यू आस्क प्रिया, मैं हमेशा 12 अगर प्रिया सेट करती, आई ज्वाइन 11:59. 12:01 नहीं होता है कभी. She has told me. हाँ, so this is the success factor in your career. If you are in time ना, you success almost 80% of your projects. क्योंकि वो आपको बहुत टाइम देता है थोड़ा सोचने के लिए, थोड़ा शांति से बैठने के लिए, टू स्ट्रीमलाइन योर एवरीथिंग फॉर द डे. अदरवाइज इफ यू गो ऑन द टाइम में भी वहां पे बाकी भी लोग ऑलरेडी रहते हैं. इफ यू गो इवन 5-10 मिनट्स लेट तो ऑलरेडी काम शुरू हो चुका होता है, तो आपको वो सेटलमेंट के लिए, मेंटल सेटलमेंट के लिए टाइम ही नहीं मिलता है. एंड इफ देयर इज अ रश ऑन द रोड तो वो तो बहुत chaotic हो जाता है. दैट्स रियली अ नाइस सजेशन आई वुड से टू एवरीवन. सब मेंशन कर रहे हैं चैट बॉक्स में ऑलरेडी कि इट्स अ वंडरफुल सजेशन, लेकिन द पॉइंट इज यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट एवरीवन. सिर्फ सुनना नहीं है, you have to this start is one of the implementing. best success factor in my career. I am just sharing. मतलब ये सही में सही है. अभी मैं जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ. When you leave your home at 8:10 or 8:15 and your office timing is 8:30, उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है? अभी जाके ये करना है, ये कल का पेंडिंग है, यार वो तो बॉस ने बोला है वो जल्दी खत्म करना है. सो उस टाइम पे आप सोच के ऑफिस पहुंचते हो, और जब यहाँ आते हो तो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो कि करना क्या है. ठीक है. So just relax. Came office 30 minutes early. Just relax 5 minutes. Yes. And 10 to 15 minutes. Plan your day. Okay. Plan your day. और अभी दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर आप 30 मिनट जल्दी आते हो ना, आपको कभी भी, मैं ऑफिस में 6:01 में रुका नहीं हूँ. मेरा टाइमिंग 8:30 to 6 है ना. आई लीव ऑफिस एट 6 o'clock एवरी डे. एवरी डे मैं 6 बजे के बाद कभी भी ऑफिस में नहीं रुकता हूँ, और न मेरे को रुकने की जरूरत पड़ती है. Because you came before time. Yes, and because of good planning of the day. So that is a benefit. And the 6 o'clock, then you spend the time with your family, 1 or 2 hours with your family easily. अभी क्या है, आप टाइम से आते हो, लोग 7 बजे जाते हैं, 8 बजे जाते हैं, 8:30 बजे जाते हैं. So पर्सनल लाइफ नहीं रहती है. So that is also important. But I must say कि ये साइक्लिक होगा. लोग जल्दी पहुंचने के लिए आपको जल्दी निकलना पड़ेगा, जल्दी निकलने के लिए आपको जल्दी उठना पड़ेगा, जल्दी उठने के लिए आपको जल्दी सोना पड़ेगा. सो इट्स अ साइकिल. यहाँ पे कोई मेंशन कर रहा है कि आई एम ऑलवेज लेट इन माय एंटायर लाइफ. लेकिन क्यों हो? ट्राई टू फाइंड आउट दैट, क्यों लेट हो? बिकॉज़ इट्स अ साइकिल. ऐसे नहीं होगा ना कि आप 12 बजे सोए हो और आपको 3-4 बजे, जैसे सर बोल रहे, आप उठ के जा रहे हो, तो आप उठोगे भी शायद, लेकिन
it might have some impact on your health as well, mental, Yes, physical yes, health both. तो yes, आपको yes. पहले आपको ठीक से साइकिल आपका बिठाना पड़ेगा. It may take a time. जो 21 days वाला रूल है, you may apply that everyone, right? Everyone. यस यस नहीं मतलब जस्ट माई माई मेरा बेड जो टाइम है बिटवीन 10:15 to 10:30 एट एनी कॉस्ट 90%. मैं 10:15 पे बेड पे चला जाता हूँ. दैट इज फिक्स. एंड 5:30 आई वेक अप एवरी मॉर्निंग. दैट इज Yes. फिक्स. सो यू फिक्स योर रूटीन. आप अगर रूटीन फिक्स करोगे ना, आपका हेल्थ, आपका काम, आपकी हर चीज है ना बेस्ट होगी. व्हाट आई लर्न. ओके. Yes, yes, right, sir, right. So yes, I'm getting certain questions here in the chat box. We are going to take it after our next question of our interview, sir. It will be great if you can share your maybe timeline of your career growth from the day one when you started working in the year of 1919, I believe, till you became AGM of this company. Can you please explain briefly with all which companies you So, have worked with, promotions and all those things? सो पहली चीज की मेरा यह पहला और आखिरी कंपनी है शायद. मतलब अभी तक मैंने कभी सोचा नहीं स्विच ओवर करने के लिए. सो आई अच्छा, ज्वाइन मॉर्गन एज ए जीटी एंड नाउ आई एम अच्छा. एजीएम इन मॉर्गन. सो मुझे एक्चुअली व्हाई पीपल थिंक टू चेंज द जॉब्स मेनी टाइम्स मनी की वजह से होता है. मेनी टाइम्स अपॉर्चुनिटी दे डोंट फाइंड कि यहाँ पे मेरा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है Hmm. या मुझे आगे फ्यूचर में कुछ कैरियर मेरा ग्रोथ नहीं लग रहा है. सो बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं. बट मुझे ऐसा कुछ हुआ नहीं. आई बीन गेटिंग अपॉर्चुनिटी टाइम टू टाइम. So when I joined GET in 1999 and then I become supervisor 2002. But यहाँ पे मैं मतलब जो भी कैरियर ग्रोथ हुआ मेरा, मैं 2-3 चीजें बोलना चाहता हूँ. जब भी आप कुछ सीखते हो ना, so you learn means you forget everything. We in Hindi we use word the पिंडदान. ओके. जो डेथ के बाद लोग करते हैं ना पिंडदान. सो आप जब कुछ भी सीखो ना, यू फॉरगेट योर ईगोज, यू फॉरगेट योर डिग्रीज, एनीथिंग एवरीथिंग. सो मैंने अपने आप को जब मैं ज्वाइन किया ना, तो आई जस्ट नॉट वर्क इन क्यूसी. मैं 4 से 5 बजे तक क्वालिटी में काम करता था जो मुझे असाइन किया था. बट आई एक्सपोज माई सेल्फ टू द ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन ऑल्सो. ओके. सो मैं आई स्पेंड 1 or 2 hours in that area also to learn, because when you start learning and you start exposing yourself to additional things. अभी उसका मैं बेनिफिट बताता हूँ. अगर मैं क्वालिटी में रहता, अगर मैं क्वालिटी में था, क्वालिटी में रहता, तो आज भी मैं उसी होरिजन में रहता. बट बिकॉज ऑफ माय एक्सपेंशन इन होरिजन, लाइक आई स्टार्ट थिंकिंग इनोवेटिव थिंग्स. आई गिव आइडियाज टू माय बॉस और माय एमडीज कि सर दिस इज नॉट करेक्ट, वी विल डू लाइक दिस, we will do like that. So this is the additional inputs what I am giving to my boss or my MDs. So they know that I am also expert in that field also. आप समझ रहे हो मेरी बात? Yes. So that is the additional benefit. So during my journey, lots of new things assigned to me, like customer visits, customer support, technical support, and customer visit, and also the market visit to know the new product requirements and all. So वो भी मुझे एक मतलब कैरियर में दिया गया. जैसे technical services, the role that I get in technical services, almost 15 to 20 days I visited the customer in India. Okay. And outside India also, I visited my China plant, my Germany plant, my Brazil plant for learnings and all. So ये जो एडिशनल आप सीखते हो ना, वो आपको बाद में काम आती है. फॉर एग्जाम्पल बहुत जगह हम देखते हैं कि आज मल्टीटास्किंग लोग मतलब जॉब मतलब रिक्वायरमेंट होती है कंपनी में. एक आदमी 2-3 चीजें तो करे तभी वो they are hiring that. Okay. Right. So because of that, I assigned the new product development portfolio globally, quality assurance portfolio globally, complaint management, customer supports. So ये जो सारी चीजें है ना, that adds my career growth in Morgan. Right. अगर मैं एक ही जगह फोकस करके काम करता, क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी, so I didn't find that कि मुझे मतलब as a AGM in operation I reach to this position. What I understand. So my journey is very long in Morgan. So graduate, then supervisor, assistant, deputy manager, senior manager. Now I am AGM. So this is my not. I stop here in Morgan. I want to grow. Okay. Definitely. So successful people are not gifted. They just work hard. Then succeed on purpose. So this is the thought what I add in my whole career growth. So अपने आप को लिमिट मत करो किसी चीज के लिए. अपने आप को एक्सपेंड करो. That will give you more opportunity. Right. Okay. हाँ. So this is whole for my career growth. Yes, ma'am.
Yes, yes. So actually, Rohan का question थोड़ा हमें और explore करना है. He is actually asking कि what will like he's currently working in, he's having R&D experience. So his doubt is that will his R&D experience help him to start his career in business analytics? Business analytics, his career in business analytics. So what type of R&D you are doing, Rohan? Can we unmute Rohan so that he can interact more? Yes, Rohan. Hello, sir. Sir, I joined as here. I'm still at the project of share. Now I'm doing आपका R&D आवाज थोड़ा business क्लियर in नहीं है रोहन, polymer. थोड़ा ये माइक क्लियर करो. Ma'am, I'm synthesizing polymer. I'm doing my R&D in polymer synthesis. In polymer science, na? Hello? Polymer synthesis. Polymer synthesis. Polymer synthesis, okay. Yes, and now I want to switch my career to business analytics. So how it will help me, this experience? So I think anything learning will help you because R&D and business analytics both are in, I think, different means entity. What I understand means I don't have too much knowledge of polymer analytics and R&D, but I think the business analytics and the R&D is two different things. But we are able to correlate them as per our business requirement. What as per my knowledge or understanding. If anyone want to add here, please add. आप भी ऐड कर सकते हो जितने लोग हैं कॉल पे. डेफिनेटली, क्योंकि Yeah, यही हमारा पर्पस है प्लेटफॉर्म Yes. का कि इवन दो यू आर अ So will स्पीकर. this course help me? यस रोहन. Hello. So will this course help me? Sure, this course will help you. Any learning will help you at any place, even in जैसे R&D. संजय सर कह रहे थे रोहन कि उन्होंने भी उनके करियर में, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हिज टाइमलाइन, हिज करियर ग्रोथ, ही आल्सो हैव गॉन थ्रू मेनी डिफरेंट मॉडल्स, मेनी डिफरेंट वुड से टास्क इन हिज पर्टिकुलर कंपनी, और उसी के वजह से बिकॉज ही वाज अवेयर अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी, ही कुड ग्रो टू द लेवल ऑफ एजीएम. ऐसा नहीं कि आप जैसे सर ने कहा कि क्यूसी में वो काम करे तो सिर्फ उसी में उनको रहना है, ऐसा नहीं है. आपको यू हैव टू ट्राई डिफरेंट एवेन्यूज एज वेल, क्योंकि अभी का प्लेटफॉर्म, अभी के अपॉर्चुनिटीज मार्केट में ऐसी है कि कोई भी आपका नॉलेज वेस्ट नहीं जाता है. इट कम्स टुगेदर एट सम पॉइंट ऑफ अ टाइम. क्वालिटी कंट्रोल हो, आपका बिजनेस एनालिटिक्स हो, आर&डी हो, आर&डी में भी कोई एनालिटिकल पार्ट लगता ही होगा. तो यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट दैट. अंडरस्टूड? यस रोहन. ओके, थैंक यू रोहन. सर, स्टूडेंट्स यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आपका जस्ट अ सेकेंड, जस्ट लेट मी गो थ्रू दैट. सो व्हाट मेन थिंग मोटिवेट यू टू स्टे इन द सेम कंपनी ओवर दिस लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम is the question. And the next question is, what is your definition of success? So मैडम देखिए, कहीं भी मतलब आपको अगर you love the field what you want, जैसे मेरे को जो opportunities दी कंपनी में because of my ability and capability for development of new recipes and for upgradation of product, for addition of new product development. So these are all what because आजकल जो प्रोफेशनल लोग हैं या प्रोफेशनल कंपनीज है, एमएनसी हैं, so they will see that what ability और capability you have. आजकल वो इमोशनल चीजें नहीं है जो आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है. Okay, so they उनको भी कुछ चाहिए आपसे, and they see that I know everything, lots of things, because आज अगर आप देखें तो for crucible manufacturer, so everybody knows me in the field of crucible manufacturing. Even lots of call I receive from competitor, कब join कर रहे हो? Okay, just sharing these things. So your knowledge, your experience, your relation. The most important thing is your relation with customers, your relation with your dealers. So everything matters, and this all help me for my growth in Morgan. And आज भी मतलब मुझे ऐसा कोई threat नहीं है कि मतलब I want to think of to change my jobs and anything, because globally I recognize as a best employee of this company, and I get what I want. मैंने कभी भी मतलब just I'm sharing my personal thing. I didn't work for money. मैंने कभी उस चीज में सेंस में काम ही नहीं किया कभी भी जॉब में आज तक. मुझे मिलता गया, आगे बढ़ता गया. सिंपल, मतलब जो बोलते हैं ना हम लोग. So that is, and I just told you the best line last year. My MD, I'm sitting with actually Morgan MD is
Anirudh Karve sir. So he's from Pune and he's now in USA. So he's operating a Morgan whole MMS. So he's first Indian to reach that position. Okay. So he just give me a compliment that is the best for me. So he told me, Sanjay, you are the one of the best employee in Morgan who gives your 110% to the company. So उससे बड़ी चीज मुझे नहीं चाहिए कुछ मतलब. So all these are the opportunities, all these are the motivations what I get from the top level management, everyone. So this motivates me to keep working with Morgan. Yes, perfectly, sir. Perfectly right. So even I would like to understand what was the point of motivation for you to connect with MITSD as a student? So I start learning. मैंने 97 में अपना मास्टर्स खत्म किया और उसके बाद I think last year I joined MIT. So basically मतलब MIT ज्वाइन करने का रीजन तो ये है कि I just start my learning one step ahead after 23 years. So because I feel I am little bit low for my knowledge upgradation. ठीक है, अभी मतलब इतना बड़ा गैप आ गया तो अभी करंटली क्या चल रहा है. So this is the one reason. So upgradation of self with current technology trend, which I feel I am lacking in some aspects. So I feel little bit hurdle कि आगे जाके मेरे ग्रोथ में शायद ऐसा ना है कि नई जनरेशन आ रही है, he is best from me. ठीक है. So this is one thing. What this is one एक चीज है जिसकी जो मैंने मतलब MIT ज्वाइन किया. Then upgradation of skills I already told. Then better career growth. For going forward, I want to become a plant head or heading the operation of the whole Morgan plant. So this is my future plan. So acquisition of top management role in my organization. So ये मेरा plan है उसकी मतलब this is the main reason what I join MIT. And it is tough for anyone who start learning after 23 years. बहुत सारी चीजें learning तो करते रहते हैं हम लोग, हमारी trainings होती हैं, leadership trainings होती हैं. That is the different thing. But academic learning is very tough when you start your learning with long gap. But I finished 2 semesters and third semester I just have remain one module of financial analytics. That is module 12. So वो मैं शायद कल खत्म करूंगा. Okay, so I completed and yesterday I received a call from MIT कि सर आप examination form भर दीजिए, आपका अक्टूबर में एग्जाम है. So thanks MIT, actually very nice syllabus. Actually मैंने 2 semester जो learn किया ना, lots of thing I learned from that syllabus. Yes, really I appreciate. And the online classes I am not able to join all the classes, but मैंने 6-7 class join किया. And I saw the videos in that your modules, like what is branding. So branding is not a name of Morgan or logo. So I saw almost all the videos. And also the last module, third semester, the project management, which is very helpful for me actually. Great. So I am doing lots of global project in Morgan. Great. So global standardization of project and benchmarking projects. So that project management syllabus, I start repeating the modules again. Oh. So yeah. So very good means the course content of MIT. So Thank I really you so much for appreciate. your genuine feedback of our content. I got the feedback. Yes, Definitely, yes, I'm going to use this. Thank you yes. so much, sir. So yes, I would like to also know about maybe highlighting key milestones or any pointers which helped you during your work experience, which will also help our students कि कौन से points है या फिर कोई ऐसे specific tips if you would like to give from your key milestones, challenges, success pointers. क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना मैम चाहिए? देखिए चैलेंजेस तो हैं काफी, मतलब ऐसा नहीं चैलेंजेस नहीं आते, बट मेरे कैरियर में भी काफी चैलेंजेस आए. ऐसा नहीं, कितनी बार मतलब ऐसा होता है, जस्ट आई एम शेयरिंग कि यू आर गेटिंग लेस इंक्रीमेंट फ्रॉम योर जूनियर्स. सो दिस थिंग्स मतलब बट डोंट डीमोटिवेट. So I work actually on 3D techniques, means we call as determination, dedication, and the most important thing is discipline. आज मैं मेरी टीम में ना मतलब I just give you things कि I want first discipline, then work. अगर आप डिसिप्लिन हो तो आपका काम अपने आप सक्सेस होता है. ठीक है. डिसिप्लिन in the sense of your attitude, that is very important. How you behave with your workmen. And one thing I learned from my career, respect everyone.
आज ऑफिस बॉय से लेके आप सबको रिस्पेक्ट दो. आप डोंट फॉरगेट टू रिस्पेक्ट एनीवन इन योर लाइफ, इवन इफ यू आर एट हायर पोजीशन. ओके, सो हम बोलते हैं ना ग्राउंड पीपल, मतलब वो जो बोलते हैं, दैट इज वेरी करेक्ट एक्चुअली. रिस्पेक्ट एवरीवन इन योर ऑफिस और इन एट योर होम. So determination, dedication, and discipline. These three things what I learn, and this is one of the things that I grow in my career. And above this, what we miss today means ownership. Ownership. This is the lacking today. बहुत बार क्या होता है, मैं जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ. अगर मेरा ओनरशिप एनपीडी का है, सो इफ मेरे को किसी और से काम रहता है, जैसे अभी एनपीडी में tooling department is different department. So in NPD, if there is requirement of new tool, so I just send mail, please make this new tool. So that is not finish my ownership. The ownership is finished when product is ready for customer. So आजकल हमारा थिंकिंग है ना, सर मैंने तो मेल डाल दिया, उसने जवाब नहीं दिया, 2 दिन निकल गए उसमें, और मैं फॉलोअप कर रहा हूँ, वो काम नहीं कर रहा. So that is not correct. आपको ग्रो करना है तो आपको पूरा ओनरशिप लेना है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड. अगर वो आप डिपेंड रहोगे किसी पे कि उसको दिया था उसने नहीं किया, देन दिस इज योर फेलियर, नॉट दैट पर्सन फेलियर. सो दिस इज द मस्ट ओनरशिप. सेकंड थिंग इज इन्वॉल्वमेंट. इन्वॉल्वमेंट जो है ना, सो 100% आपका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए किसी भी काम में. सीखने के लिए आप कोई भी इन्वॉल्व, मतलब अगर आप सॉफ्ट फ्लोर पे जाकर प्रैक्टिकली यू डिडंट फील हाउ टू मेक द प्रोडक्ट, यू डिडंट सक्सेस इन योर कैरियर. आप लैपटॉप पे बैठ के वो नहीं कर सकते हो जो आप रियल में प्रैक्टिकली जाके सीख सकते हो. I just give an example. The largest crucible what we made, it takes 2.5 years. Not easy project. Make a such big crucibles. Lots of hurdles, lots of challenges. But हमने मतलब you can't believe we spent almost 2 CR on this development. Only the one crucible what we developed. हमने 2 CR, just I am sharing the things. Okay, so हमने spend किया उस पे. Okay, but the 2.5 years, lots of pressure from top management. We are losing the market, we are losing the customers. Why you are taking too much time? So lots of pressure because business जा रहा है, market हम मतलब customer जा रहे हैं. So these all are challenges. So ownership, involvement, and the third most important what I talked earlier is the timeline. Timeline of any project is very must. आजकल कोई वेट नहीं करता है. कंपटीशन, कॉम्पिटिटर, कस्टमर वो आपके प्रोडक्ट का वेट नहीं करेंगे, उनको प्रोडक्ट का प्लांट चलाना है. सो टाइमलाइन फॉर एवरी वर्क, एवरी प्रोजेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइट. सो दिस आर द हेल्प, मींस ये सब चीजें ने मुझे हेल्प किया फॉर मेरे कैरियर ग्रोथ के लिए. यस. जनरली ऐसा होता है कि खुद का बिजनेस होगा तो ही आप उसकी ओनरशिप लोगे, तो ही आप हर एक एक्टिविटीज की ओनरशिप लोगे उसमें, जो भी जब तक कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है. और इफ यू आर एम्प्लॉय, जो आपको जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो उसमें भी जो फंक्शन में आप काम कर रहे हो, एक बार मेरा काम खत्म हो गया, बात खत्म हो गया, अभी अगला वाला देख लेगा. दिस एटीट्यूड शुड नॉट बी देयर. यू शुड टेक ओनरशिप ऑफ everything which you are doing and ownership of your company, even if you are working there as an employee. अभी जैसे मैं एजीएम हूँ, हाँ, यस, जैसे मैं एजीएम हूँ, मेरे को दूसरे काम भी देते हैं तो मैं मना नहीं कर सकता इस पोजीशन. अगर मैं असिस्टेंट मैनेजर प्रोडक्शन हूँ, यस आई डिनाई सर मेरा काम नहीं, बट एट दिस लेवल यू डिडंट डिनाई एनीथिंग. मतलब आप जो असाइन किया वो तो करना ही, प्लस एडिशनल जो भी मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट है यू हैव टू डू दैट. सो ये सारी चीजें मतलब अपने को करनी ही पड़ती है. मतलब राइट. आई कंप्लीटली एग्री विथ यू सर. Sir, there is a question in the chat box. I would like to go through that. Pradeep is asking, what is the best as per you change or impact you had on your team or team member in your journey? So मैं just एक एग्जांपल देता हूँ. I am the first employee who transfer from Mehsana plant to औरंगाबाद plant. मैं वहां से ट्रांसफर होकर यहाँ पे आया था. ठीक है. सो मीन्स वो प्लांट तो अभी बंद हो गया. 2019 में वी शिफ्टेड दैट प्लांट. सो व्हेन मेरा जब ट्रांसफर यहाँ हुआ तो आई हैव टू लीड द क्वालिटी टीम. ठीक है. सो जो मेरे अंडर में 8 से 10 लोग थे यहाँ पे. सो आई एम न्यू विद दैट टीम. सो इट इज अ बिग चैलेंज फॉर मी. It is big challenge for me and big challenge for the team member to accept me as a leader, means accept me as a boss. ठीक है. So I struggle almost 6 to 8 months for that to build up a trust in my team. Okay. So बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी आपके कैरियर में जहां पे आपको ट्रस्ट डेवलप करना पड़ेगा टीम में. So वो जो टीम मैनेजमेंट है that is very important.
एंड इन टीम मैनेजमेंट द फर्स्ट थिंग इज द ट्रस्ट, आपका और आपकी टीम के लोगों का ट्रस्ट होना चाहिए आप पे, नंबर 1। नंबर 2, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए आपको और आपकी टीम पे, ठीक है। नंबर 3, फेथ मीन्स जो नॉलेज है आपका वो और आपकी टीम के उसमें आपका इंटरेक्शन होना चाहिए। अभी मैं जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ, आई एम द एचओडी हु स्पेंड ऑलमोस्ट 60% टाइम विथ माय टीम एवरी डे फॉर डिस्कशन एंड सपोर्ट। आप समझ रहे मेरी बात? हाँ, तो ये जो 3-4 चीजें हैं टीम डेवलपमेंट के लिए, सो दिस ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। अभी दूसरा, यू नो द स्किल्स ऑफ योर टीम मेंबर्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड बेस्ड ऑन दैट यू असाइन द जॉब। ओके, सो ये भी इंपॉर्टेंट है कि वो किसको कहाँ फिट करना है, किसको कहाँ फिक्स करना है, कौन सा जॉब किसको असाइन करना है, ठीक है। एंड वी आर मेकिंग जस्ट डेवलपमेंट प्लान फॉर ईच एंड एवरी पर्सन इन आवर टीम and the career development plan. So for that they are also we keep motivating them. Now you have to grow in that career path. So based on that we identified we called as TNI, called training need identification for each employee. So we do every year that for based on individual employee. So वो भी हम प्लान करते हैं। So ये सब जो एडिशनल मोटिवेशन हम लोग टीम में देते हैं। और दूसरा एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अदर देन दिस ना, यू हैव सम पर्सनल टच विथ योर टीम मेंबर्स, यू नो एवरीथिंग, मतलब एवरीथिंग मीन्स बच्चे कितने हैं, क्या कर रहे हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैडम, व्हाट आई लर्न, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कोई मतलब एम्प्लॉय छुट्टी पे, सर मेरा बेटा बीमार है, सो जस्ट कॉल हिम आफ्टर इन द इवनिंग, सो हाउ इज योर सन। बहुत इम्पैक्ट पड़ता है चीजों का। So this will build your trust and faith on the teams. So this is an additional support what team members want. अब मैं एक चीज बताता हूँ, मतलब इतना faith and trust है ना, in my 21 years of career, I didn't deny any leave application from my employee, my team member. मैंने आज तक कभी उनकी लीव को डिनाई नहीं किया है। बट एक शर्त रहती है मेरी, कि जो जिम्मेदारी आपकी है, आप घर पे रहो या कंपनी में रहो, मेरे पास उस जिम्मेदारी का फोन नहीं आना चाहिए कि सर ये काम पेंडिंग है, कंप्लीट नहीं हुआ। सो दिस इज माय ओनली, वो मेरा जो वो है कि मेरा रिक्वायरमेंट ये है, मेरे पास फोन नहीं आएगा कि सर ये नहीं आया तो ये काम रुका है। आई डोंट लाइक दैट। दिस इज द वन कंडीशन based on the approval of leave for everyone. Right. Again, one more nice suggestion you have given. More than a boss, you should be like a guide or a mentor to your team members. है ना, support होना चाहिए उनको, so that they will give their 100%. They will try to give their 100% towards their work. अगर boss ही अच्छा नहीं है तो, in the last session only we were discussing कि boss ही अच्छा नहीं तो क्या करेंगे. But this is the nice suggestion I must say. Yes. So moving to the next question, sir, I would like to know more about your product, the new product development which you are doing, and how you are maintaining the quality of any of the product which you are maybe creating, और उसका मतलब प्रिपरेशन और उस कुछ कैसा होना चाहिए। एंड बिफोर दैट मे बी टू प्रिपेयर विद द न्यू प्रोडक्ट, पहले आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए? So we are the company, जैसे अपग्रेडेशन की मैं बात कर रहा था, so we are the worldwide company who make the crucible by using robots. So जैसे ये चीजें, अभी मैं जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ। अभी जो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, व्हाट वी आर फेसिंग हर्डल्स। सो सबसे पहले कि कोई भी नई चीज आती तो रेजिस्टेंस आता है, मतलब आप समझ रहे हो, लोगों मीन्स जो टीम में अभी जो ज्वाइन किए हैं उनको भी पता होगा कि आप कोई भी नई चीज अगर रूटीन से हटके कुछ काम दोगे किसी को, मेनली जो प्रोडक्शन लोग हैं वो हमेशा रजिस्ट करते हैं। yes. अब बट अभी माइंडसेट लोगों का धीरे धीरे चेंज हो रहा है, मतलब अभी भी हम लोग फेस करते हैं इशू। अगर कोई नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट का इंक्वायरी आता है तो पीपल आर मोर फोकसिंग ऑन देयर रूटीन जॉब और रूटीन वर्क। अभी दे फील दैट यार ये एडिशनल चीज क्या आ गई, मुझे ये करना पड़ेगा, ये बनाना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। सो नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ चेंजेस और डूइंग न्यू थिंग्स इन ऑपरेशन, सो दिस इज द फर्स्ट माइंडसेट व्हाट वी आर फेसिंग। ओके, एंड मेनी टाइम्स द डाउट और लो कॉन्फिडेंस ऑन प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, सो वो भी थोड़ा डाउट रहता है टीम को और चीजों को। बट द प्रोसेस व्हाट वी फॉलो इन मॉर्गन, आई एम जस्ट शेयरिंग, सो वी हैव अ एप्लीकेशन टीम in the field. Okay, so for any new product or new inquiry, now we collect voice of customers first. The current product, what he is using, the current challenges, what he is facing in that product,
एंड व्हाट वी प्रोवाइड बेस्ट, क्योंकि जब तक आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से बेस्ट नहीं दोगे तब तक वो कस्टमर उसको यूज नहीं करेगा ना. व्हाई ही इज चेंजिंग, वहां भी एक रेजिस्टेंस है. राइट. नई चीज कस्टमर क्यों लगाएगा? दैट इज अ टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, एंड वो बोलेगा सर नहीं चलेगा तो मेरा इतना नुकसान होगा ये. सो हम उससे अच्छा क्या दे सकते हैं? फॉर दैट तो वी कलेक्ट वॉइस ऑफ कस्टमर. And when we develop a new product, then we do the field trials by application team. We have 3-4 people in application team. And after a successful trial, so we make a value proposition, what value we added in that product to the customer. And that value proposition will help to add the business in our portfolio for the new product. So this is the actual process what Morgan is following. So mindset ऐसा है लोगों का, जैसे नया चैलेंज है, concern of customer satisfaction है, handover of new product to operation, this is one challenge. Third challenge is the expenses, is management is ready to expand 10,000 या 20,000 रुपए भी अगर R&D या टूल पे एक्सपेंड करना है तो so many questions asking. After COVID the situation is changed, lots change. So जो भी एक्सपेंसेस जैसे अभी क्रूसिबल बनाना है तो एक टूल का एक्सपेंस 10 to 15 lakhs रुपीज है. So we review the business cases कि बिजनेस है कि नहीं फ्यूचर में. वी रिव्यू द कस्टमर रिक्वायरमेंट. सो ऑल थिंग्स, दीस थिंग्स आर मींस फॉर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट. सो व्हाट वी प्रिपेयर, वी डू द मार्केट सर्वे और केस स्टडीज, देन आइडिया जनरेशन होता है, देन अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर रिक्वायरमेंट है, देन वी मेक अ क्रॉस फंक्शनल टीम एंड ऑल. एंड इन आवर एमएमएस वी हैव 4 plants. So which plant will lead this new product? So we decide that also. If the requirement of the new product in Chinese market, so we assign that product to our Chinese plant, so that is nearby, and we are able to give good services and all. So all these things we are managing for the new product development. I'm just giving an example of Morgan what we are doing. Yeah. Yes. So yes, and my one more question in that was, how exactly you are maintaining the quality of all these products? So obviously there will be certain standards for maintenance, but apart from that, what exactly you do? मैं हिंदी में बोलूं थोड़ा सा, मतलब हाँ चलेगा सर. Yes. जो मैं प्लांट में रोज बोलता हूँ. मतलब मैं, मेरे वर्कर्स हैं, एक्चुअली वी आर डेवलपिंग सम, जैसे हमारा सेफ्टी कल्चर इज वेरी स्ट्रांग इन मॉर्गन. Okay, so like that we are now working on the developing the quality culture in the plant. Okay, that is very important. मतलब बोलते हैं ना खून में क्वालिटी होना चाहिए. वो जो मेंटेलिटी है, अभी क्या होता है मेंटेलिटी, जैसे आई एम शेयरिंग यू द क्वालिटी. सर जर्मनी प्लांट के आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी को कोई बीट नहीं कर सकता, इवन एमसेल इंडिया. सो द मेंटेलिटी ऑफ द पीपल, जर्मन प्रोडक्ट इज बेस्ट वन. ओके, सो अभी जैसे मैं मतलब प्लांट में जाता हूँ, सो मैं ये बोलता हूँ जो लिखा है वो करो, जो नहीं लिखा है वो नहीं करना है. ठीक है, मतलब द एसओपी व्हाट वी रिटर्न, यू हैव टू डू दैट ओनली. जो नहीं है एसओपी में वो काम नहीं करना है. और जो आप काम कर रहे हो वो आपको लगता है कि अच्छा काम है, बेटर मींस प्रोसेस इंप्रूवमेंट, देन यू ऐड दैट इन एसओपी. वेरी सिंपल. सो ये चीजें मैं मतलब जस्ट आपको बता रहा हूँ कि हाउ आई एम मेंटेनिंग. सो अदर थिंग्स व्हाट वी हैव टू मेंटेन, सो दैट लिसन टू द वर्ड्स ऑफ कस्टमर एंड देयर रिक्वायरमेंट. वो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपका एक प्रोडक्ट एक कस्टमर के पास अच्छा चल रहा है तो ऐसा नहीं कि वो दूसरे के पास भी अच्छा चल रहा है, बिकॉज बहुत सारी चीजें चेंज होती है, इवन दो ही इज यूजिंग इन द सेम एप्लीकेशन, बट जो तरीका है यूज करने का. अभी मैं जस्ट क्रूसिबल का एग्जांपल देता हूँ. क्रूसिबल जनरली यूज होती है हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन. ठीक है, अभी हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन में कब क्या हो जाए, वी डोंट हैव एनी कंट्रोल ऑन दैट. Okay, so it is very difficult to analyze the failure or root cause of failure of crucible exactly. आप कभी भी एनालाइज नहीं कर पाते हो. ठीक है, अभी क्रूसिबल इज अ सिरामिक प्रोडक्ट. जनरली आप जब सिरामिक प्रोडक्ट मींस कप, चाय का कप होता है, अगर आप उसमें गर्म चाय डालते हो कितनी बार देखना आप क्रैक हो जाता है. सो दैट इज वी कॉल्ड एज थर्मल क्रैक, थर्मल शॉक क्रैक. ठंडी चीज पे गर्म चीज डाल दी, ऐसे ही क्रूसिबल का है. अगर आप क्रूसिबल गर्म है, आपने ठंडा मेटल डाल दिया, आपने बर्नर बंद कर दिया, बर्नर को ज्यादा देर तक चलाया, तो भी क्रूसिबल फेल हो जाता है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू कंट्रोल योर प्रोडक्ट क्वालिटी. राइट. और बेसिकली मैंने ये देखा है कि हम जो मिस करते हैं टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ एनी प्रोडक्ट, वी डिडंट डू द डेटा एनालिसिस एंड इट्स ट्रेंड, क्या चल रहा है, आपका जो प्रोडक्ट का क्वालिटी है वो किस ट्रेंड में जा रहा है. मीन्स
जो आपका प्रॉपर्टीज रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट का, सो आजकल वो मिस होता है, काफी लोग नहीं करते. You have to do the data analysis of your properties or what the checkings you have to do on your product properties. Then follow the standard SOP work instruction provided. So we are ISO 9001. So we are strictly following these things. And customer focus, employee engagement, process approach. So these are some basic things. And continuous improvement. Upgradation is very much nowadays. अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो यार, मैं तो मतलब ये स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा हूँ, मेरा प्रोडक्ट बन रहा है, मार्केट में जा रहा है, यू finish your business in next 5 to 10 years, not more than that. If you are not upgrading yourself, yes, that is very important. अभी जैसे we call it a product life cycle, so that is very important. आजकल वो जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में अपग्रेड कर रहे हो तो कस्टमर भी also want upgrade his product what he is using. आज अगर क्रूसिबल we are मीन्स क्रूसिबल का लाइफ है, there is number of hits, मतलब कितनी बार गर्म कर रहे हो मेटल, अगर आज 100 हिट मिल रहा है तो उसको एक्सपेक्टेशन है कि मेरे को 1 साल बाद उसमें 120 हिट मिलना ही चाहिए, क्योंकि आपका एनर्जी कॉस्ट बढ़ रहा है, आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ रहा है. तो अगर लाइफ नहीं बढ़ेगा प्रोडक्ट का तो वो आपका कॉस्ट रिडक्शन होगा ही नहीं. राइट. तो बहुत सारी चीजें हैं, तो टाइम टू टाइम यू हैव टू अपग्रेड योर प्रोडक्ट, अपग्रेड योर नॉलेज एंड विजिट योर कस्टमर्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप, मैं ये नहीं बोला सेल्स वाले जा रहे हैं, सेल्स आर पीपल आर डूइंग डिफरेंट थिंग्स, बट टेक्निकल पीपल must visit their customers, see their products, see their applications, understand their actual requirement. Correct. So this is also one of my suggestion कि टेक्निकल लोग प्लांट में बैठेंगे, प्रोडक्ट इवन नो टेक्निकल लोगों को भी मार्केट में जाना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए, प्रोडक्ट को समझना चाहिए, कस्टमर नीड को समझना चाहिए, बिकॉज द रिक्वायरमेंट ऑफ सेल्स एंड टेक्निकल पर्सन इज वेरी डिफरेंट. ओके, राइट. सो बहुत अच्छे से आपने बहुत सारे टिप्स दिए हैं. जो लोग भी मैन्युफैक्चरिंग में है या फिर आपके सिमिलर फील्ड में है, ऑपरेशंस में है, उनको बहुत अच्छे टिप्स मिले हैं. जो लोग मे बी दे माइट हैव रिसेंटली स्टार्टेड विद देयर करियर, उनको पूरा मे बी थोड़ा सा एटलीस्ट तो विजन आ चुका होगा कि मुझे क्या करना चाहिए व्हेनेवर आई विल बी स्टार्टिंग माय करियर इन एनी ऑफ द कंपनी. और बहुत लोग इंटरेक्शन भी यहाँ पे कर रहे हैं. सो आई मस्ट से कि दिस वाज रियली नाइस इंटरेक्शन विथ यू, क्योंकि आपने बहुत सारे पॉइंट्स भी शेयर किए, कुछ पर्सनल टेक्निक्स भी आपने शेयर किए. आई लाइक द वन अबाउट द 3D टेक्निक विच यू शेयर्ड. द 3D, आई मस्ट से इट्स डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन. एम आई राइट? yes ma'am, yes. So this has to be followed by everyone. And one more point I liked in this discussion, कोई भी challenges आ जाए आपको रुकना नहीं है. You have to keep growing and keep going for your success. So that is the success mantra which is shared by Sanjay sir. तो पर्सनली मुझे भी आपका सेशन बहुत अच्छा लगा, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा. आई मस्ट से कि जिन लोगों को सर के साथ कनेक्ट करना है, विथ योर परमिशन सर, ऑब्वियसली कैन डेफिनेटली कनेक्ट विथ संजय सर. सर ने मुझे कहा कि मैं लिंक्डइन थोड़ा कम देखता हूँ, लेकिन नाउ यू हैव टू स्टार्ट गोइंग थ्रू योर लिंक्डइन प्रोफाइल सर, बिकॉज आई मस्ट से कि स्टूडेंट्स आर गोइंग टू कनेक्ट विथ यू एंड दिस इज द पर्पस ऑफ दिस synergy sphere. So maybe with all these questions, I should come to the conclusion part. So again, I am saying this was really very insightful and very motivating session to know about your journey, sir. And the last quote I would like to mention here: learn from the mistakes of others. You can't live long enough to make them all yourself. है ना? तो जो भी हमने अभी सेशन में डिस्कशन किया है, सर ने बहुत सारे आपको टिप्स दिए हैं, तो उसको इम्प्लीमेंट करो. टाइम मैनेजमेंट के बारे में सर ने बहुत अच्छे से कहा है कि यू हैव टू रीच बिफोर द टाइम टू गेट योरसेल्फ रेडी फॉर द नेक्स्ट प्लान, है ना? तो ऑल दीज थिंग्स वी शुड स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग. सर, स्टूडेंट्स आर आस्किंग फॉर योर लिंक्डइन ID as well. I guess till the time Priya is giving, it's proceeding towards the vote of thanks. I will just copy paste. I will try to copy paste the link of sir's profile here. So मैं दो मिनट और लूंगा मैडम. Yes sir. 2 मिनट. जो मेरा मतलब दूसरी एक चीज है कि I recommended to read one book called The Amateur Mindset, The Professional Mindset by T.S.K. Raman. Okay, so this book is very good. So the amateur mindset, the professional mindset, you understand the journey of these two things. One suggestion from my side. So please purchase this book. सस्ती है और अच्छी बुक है और very easy in English language because this book is written by an Indian, Raman, T.S.K. Raman.
Okay, the amateur mindset, the professional mindset. So this will help for your journey growth. And second thing, you watch one movie, The Pursuit of Happiness. Okay, Yes, आई that's थिंक really देखा nice. होगा लोगों ने कि अगर आपका कोई सपना है तो उसकी रक्षा करें। जब लोग खुद कुछ नहीं कर सकते तो वो आपसे कहते हैं कि आप भी नहीं कर सकते, बट आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए हर संभव प्रयास करें। So you just watch a movie, The Pursuit of Happiness, that is directed by Gabriel Makino, and this is a real biography of US businessman, the Christopher Paul Gardner. So ये दो चीजें आप देखो, so you get lots of motivation in reading the book. What I suggest, the amateur mindset, the professional mindset, and watch this movie, The Pursuit of Happiness. This is the real story of one US businessman. Okay, thanks. Yes, thank you so much, sir. Now I request Priya Chanda to take it ahead towards the conclusion. Thank you. Thank you so much, ma'am. Students, please stay here. We have an announcement for you all at the end. So first of all, I would like to express my heartfelt gratitude to Mr. Sanjay R. Dubey for his outstanding contribution in this initiative. Your expertise and insights truly have made a significant impact on our attendees. Your talk was not only informative but also deeply inspiring. Your passion has really shown through in every word you have shared. Moreover, your career journey, as highlighted in your introduction, serves a powerful testament to dedication and hard work. Your achievements from your bachelor's in chemistry to your current role are truly impressive and motivating for all inspiring professionals. So once again, thank you for your time, wisdom, and inspiration. I would also like to thank our Professor Bhagishri Pandey ma'am for her valuable inputs in organizing as well as conducting this session. Your views have truly added to this initiative. So thank you, ma'am, once again. Thank Once you. again, Sorry to cut you, Priya. We must take a group photo. So Yes, I ma'am. request all the students to please your cameras should be on. Uh, Bhageshri ma'am, will you be taking the screenshots? Yeah, sure. Okay, I'll thank take you. notes. Thank you. सबको सिर्फ कैमरास ऑन करने दो. And even during the session you can keep your cameras on. थोड़ा interaction होने के बाद अच्छा लगता है सबको देख के, थोड़ा है ना, एनर्जी आ जाता है हमें भी. And also, if anybody of you are interested in giving a feedback on your video, so we can just have a recording of your feedback also. Definitely. Is anyone would like to say anything? You can maybe openly share on this platform about Synergy Sphere initiative, about this particular session maybe. Anyone would like to mention? You can just raise your hand. We can unmute you. Yes, anyone? आपको अगर कोई भी फीडबैक देना हो अबाउट दिस पर्टिकुलर सिनर्जी स्फीयर इनिशिएटिव और मे बी अबाउट दिस पर्टिकुलर सेशन. हाँ, सेशन तो गुड है, लेकिन अपफ्रंटली जिसको अगर यस, सहाबुद्दीन, कैन वी प्लीज अनम्यूट सर? सहाबुद्दीन सर, आई एम जस्ट स्पॉटलाइटिंग यू, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. यस. Good morning, ma'am, and good morning, Sanjay sir. Good morning. Sir, from this session, actually, मुझे हम लोगों को क्या है ना सर, बहुत कुछ मालूम है, बट फिर भी जब किसी एक्सपीरियंस और अच्छे कमेंटेटर से ये सब सुनने को लिए पड़ता है, तो सोचते हैं यार ये तो चीज मुझे थोड़ा बहुत मालूम था, बट मैं क्यों सर के जैसा ऐसे इम्प्लीमेंट नहीं किया. So that is the opportunity. That is the opportunity, Sabuddin sir. वही ग्रैब करना है. And what I experience कि लाइफ में अपॉर्चुनिटी सबको मिलता है, बट जो ग्रैब करता है वही आगे बढ़ता है. जब अपॉर्चुनिटी आया ना मेरे ट्रांसफर का, आई जस्ट शेयरिंग आई टेकिंग 1 minute, तो मेरे पास 11 बजे रात को मेरे एमडी का कॉल आया कि आपका जॉब महसाना से औरंगाबाद ट्रांसफर करना. सो दैट इज अ शॉकिंग न्यूज फॉर मी, एंड दैट डे इज माय डॉटर्स बर्थडे. मुझे रात भर नींद नहीं आया. मैं सोच रहा था मैं कैसे जाऊं, मैं तो जानता नहीं हूं किसी को, मुझे क्यों वहां भेज रहे हैं. अगर मैं वो ग्रैब नहीं करता, मैं मना कर देता, तो आज वो प्लांट बंद किया हमने वहां पे. आप समझो मेरी चीज. और मैं यहाँ पे ट्रांसफर होके आज मैं इस पोजीशन पे आया. सो दैट इज द अपॉर्चुनिटी एवरीवन. अगर आप बहुत ज्यादा सोचोगे ना तो आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाओगे. डोंट थिंक सो मच. अपने आप सब चीजें हो जाती है एक बार आपने एक्सेप्ट की अपॉर्चुनिटी. सर इसीलिए मैं आज ये वाला सेशन देख के मैं मतलब रियली इतना मतलब एक्टिव और मोटिवेट हो गया हूँ. जैसे मेरा कंपनी में सर, मैं एक्चुअली प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन साइड में हूँ.
ओके और मैं बी मैकेनिकल और मैं MIT से PGDM कर रहा हूँ। और रिसेंटली मैं PMP के लिए 35 आवर्स का एक कंप्लीशन कोर्स भी कर लिया हूँ, जिसके लिए मैं PMI से PMP सर्टिफिकेट लेना है हमको एग्जाम देके। तो मैम एक्चुअली सर मुझे मेरा ऑफिस में एक इंटरनल वैकेंसी निकला फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजर। हमारा अपना कंपनी में, मैं SMS ग्रुप में हूँ, ये इंडस्ट्रियल स्टील इंडस्ट्री में है सर। क्योंकि मैं मॉर्गन से बहुत सारा ऑर्डर हम लोगों का कंपनी करता है सर, SMS ग्रुप, आई थिंक यू नो दैट। तो क्या सर, मुझे वही अभी इतना मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं वो इंटरनल वैकेंसी जो निकला प्रोजेक्ट मैनेजर, मैं उसी में सोचूं अभी अप्लाई कर दूं। अपॉर्चुनिटी छोड़ना नहीं है सर, कोई भी सिंगल अपॉर्चुनिटी छोड़ना नहीं है, कोई भी सिंगल अपॉर्चुनिटी। यू नेवर नो किसमें से क्या निकल सकता है आपके लिए। तो सर अब मेरा ये एग्जाम्पल है, रियल लाइफ एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि मैं रियली ये वाला सेशन मुझे इतना ही अच्छा लगा और मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा फिर। थैंक यू सो मच साबुद्दीन, क्यों आपने ये ओपनली मेंशन किया, क्योंकि हमारा यही ऑब्जेक्टिव है ये ऐसे सिनर्जी स्फीयर सेशन का। तो सिनर्जी स्फीयर इज यूनाइटिंग माइंड्स मतलब माइंड्स में आपके ऑलरेडी है, लेकिन जब आप साथ में आ जाते हो, ग्रुप में आ जाते हो, तभी वो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आती है और अच्छे से आप इम्प्लीमेंट कर पाते हो, है ना। सो आई मस्ट से कि दिस इज द पॉइंट फॉर यू फॉर टू स्टार्ट विद द न्यू जर्नी। Exactly, ma'am. All the best to you. Thank you very much. All the best. Yes, thank you so much. Can we please unmute Amit Kumar Sahu? Yes, Amit Kumar. Can you please keep your camera on? Yeah, ma'am. Yes, Amit. Hi, ma'am. Good morning, sir. And good morning. This is Amit Kumar Sahu. I am working as a manager in Hindalco Industries Limited, Aditya Villa Group. And thanks for the session. And we really learned a lot from sir. Actually, this is a business leader. I learned about the prioritization of jobs and how he planning so that he can easily left by time, and how he handled the situation whenever his father is expired, and he I think simply go that he well managed and tried to help his sister and brother to grow up and caliber in his life also. And part is that his communication skill is also so good, and I have learned a lot. And thank you, MIT for this session also. Wonderful. Thanks for really thanks for you are sharing this feedback, क्योंकि यही feedback, ऐसे ही feedback की वजह से we come up with new sessions. किसी ने chat box में mention भी किया है कि please keep planning such a sessions oftenly. तो oftenly मतलब हम यही करने वाले हैं कि at least once or twice in a month we are going to keep such a synergy sphere sessions, and we expect, जैसे संजय सर ने खुद ये initiative लिया, when we connected with him, he immediately was ready to conduct such a session. Obviously we are there to help you to plan your session and everything, and I am there to ask you questions, multiple questions during the interview, so which will help you to ease out and to talk with other students. तो यही purpose है ये platform का. तो डेफिनेटली डू कनेक्ट, और जब भी हमारे ऐसे सेशंस होंगे तो प्लीज अटेंड, क्योंकि कैसा है, जब तक मुझे नंबर नहीं मिल जाता अटेंडेंस का, टिल देन आई विल नॉट बी एबल टू प्लान सच अ सेशंस, है ना. सो one more thing I can add this. Actually, आपका नेटवर्क शायद जा रहा है अमित, सॉरी टू कट यू, आपका नेटवर्क शायद जा रहा है. Yeah. That's why I'm coming out from office. It is right now? Okay. Yes. It is okay? Yes. Actually, I'm working in a big organization, and thing is that I have as a talent member, I have also attended so many behavioral program also, like SEED and FIVE. It is a flagship training program of Hindalco also. But thing is that the real life scenario and the real life explanation, faculty may come and teach us how to be a industry, how to be a good leader, and how you can self develop yourself, and how you manage your team, how to manage conflict, and how to manage empathy. Everything I learned.
but the practical session from learning from the front to front is different. And I think the session is very nice. And I really recall my session was last 2 years back. Whichever I taught in White House Building, Kolkata. I really recall these sessions, and it will definitely help me to grow up like a big good leader in my career in the coming days. थैंक यू सो मच अमित बहुत अच्छे से अपने फीडबैक शेयर किया है एंड दिस फीडबैक इज टू संजय सर ओनली नॉट ओनली फॉर दिस प्लेटफॉर्म दिस फीडबैक इज टू संजय सर क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है उन्होंने सारी चीजें ओपनली सबके साथ शेयर किए हैं एंड सर ये भी बताया कि वो एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में कुछ कर रहे हैं बेसिकली आवर प्लांट इज एल्यूमिनियम प्लांट and is one of the biggest plant in India also. You know about Hindalco, it is Aditya Birla Group, it is the biggest aluminum manufacturing, and the plant is situated in Singrauli also. Sir might may know about that because I know you have a STAS machine for degassing rotors, aluminum, molten metal, everything I know. Okay. Yeah. Sir, knows everything. Our aluminum is the premium aluminum, 99.999% purity in aluminum. It is almost all aluminum are exported to the out of country like Japan, Malaysia, and everything only. Yes. Sir, lead aluminum manufacturing company. Sir might me know about this. Yes. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, Amit Kumar, sir. Thank you so much. Yes. Thank you. Yes, Priya, over to you. Thank you, ma'am. So it was a lovely session, and students, we are all launching the poll for you all to get your feedback. So please answer the poll questions also quickly. So till you are answering the poll questions, we are going to come up with next Synergy Sphere session soon, probably on 7th or 14th of October. So it will be on Saturday only. So again, I request everyone to be on time. जैसे अभी संजय सर ने कहा है, before the session at least try to join 10 minutes, 15 minutes before, so that we can start the session in time. Indian timing से हमें नहीं जाना है. 10 बजे सेशन है तो 10:05 तक ज्वाइन होना है, ऐसे नहीं करना है सबको. Before the time you have to join, so we can start the session in time. Right? So soon we are going to share all the details with you. Yeah, and our this Synergy Sphere session will be also available on YouTube, so you can check on YouTube. It is available under the Synergy Sphere playlist on MITSD YouTube channel. So soon this video will be also available there. Our first session is available already on our YouTube channel, so you can check it on our YouTube channel. Yeah. Okay. Yes. So thank you everyone, and just quickly answer the poll questions. Also, we can then wind up the session. बहुत सारे लोग ऑलरेडी ऑफिस में काम करके सेशन अटेंड कर रहे हैं, so that's a good thing. थोड़ा टाइम और होना चाहिए था मैडम. We'll try to increase the time. Yes, we'll try to increase. Yes. Students, quickly answer it. I can see only 70% of you have done it. So please answer and have a good day, everyone. So we will be winding up in a minute. If you all can answer quickly. YouTube पे सिर्फ search for MIT School of Distance Education. You'll be able to go through our channel, and वहाँ पे Synergy Sphere का भी session is uploaded, as rightly said by Priya Chanda. You can even share this this YouTube link with any of your fellow mates, so that they can also get an insight of what is going on in Synergy Sphere, and it will help you also to understand this platform. So yes, please go and check there. This is the link I have pasted for the last session. I guess most of you have answered the poll question, right? Yes, 89%. Yes. Okay then. Thank you so much, Sanjay sir, for connecting with us and for delivering this session. Personally, I am very much grateful for your session. We'll be in touch, sir. Yes. No issue. So all the best, everyone. All the best. Thank you, sir. Thank you all of you for attending it, and hope to see you all in the next session as well. Have a good day, everyone. Thank you so much. Have a nice weekend. Bye-bye.